Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval has spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. दिखा रही है इसमें नहीं 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 इसमें नहीं आ रही दूसरी स्ट्रीम चल रही क्यों चल रही सारी सीन नहीं पता I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, Sueño, mijo, what if you had your own country? Like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. एक चल रही है इसके तो हॉरिजॉन्टल है ठीक है ना और एक चल रही है वर्टिकल पे ठीक है आओ ठीक है अपनी सारी स्ट्रीम चालू की गाइस
बढ़िया आवाज भी दोनों पे जा रही होगी। ये लगा तो दिया है इसे। फिर भी मैं एक बार आवाज पे चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। और इसका ले दूसरी आवाज। ठीक है, जा रही है, इधर से जा रही है, बढ़िया। चलो। नहीं है, This is Operation Kingslayer. Listen. जैसे नहीं है। और जैसे भाई और नहीं भाई, रिप्लाई नहीं दूंगा, वो सुन सकती है तुम्हारा। उसका तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है ना। तुम मेरे गेम प्ले में आए, ये हमारे में हमारे काफ पे गोली पे तुमने पता नहीं कौन सा जादू मंत्र मार दिया है। हमारा जब से पहले जा रहा है उसी से लगातार फिर रहा है वो। उस दिन से एक मैच में बंदे के 6 से 7 किल हुए। सोचो भाई, 6 7 किल नहीं हुए, वो बंदा जो सपोर्ट दे देता था ठीक ठाक, वो बंदा भाई 2 दिन से लगातार फिर रहा है, लगातार वार पे वार खा रहा है वो बंदा, वार पे वार इतना पिट रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा भाई। उस दिन से वो तो एक काम कर रहा हो, पिटने का काम बहुत अच्छा कर रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या समझू है। ओके, अरे माँ कहाँ लगा दिया मैंने, तो कभी नहीं दिख रहा ये। यार कोई गेम देखो यार, हम साथ में खेले तुम्हारे मस्त। यहाँ मुझे मजा आता है खेलने में ये। Got some background for you on Carl Burkhart. Looks like you were right. His 214 has him in Iraq with 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment back in '03, discharged in '06, and then he drops off the radar. I'm getting the notion he's kept in shape. Our deserter tells me he's at a cartel base located inside the abandoned Choza Padre silver mine. Find Burkhart, take him out. Killing him will disrupt the cartel's training program for months. Copy that. We'll get it done. ये क्या एक मूवी मिली है देखने को हमें। अच्छा, ये YouTube की तरफ से खुद ही लग रखा है शायद। हाय का मैं है देखने लगा रखा था। Carl Burkhart, former sergeant, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment, natural-born killer. Show me what you got, cocksuckers. Make me hard. Go, go, go! Carl was in and out of juvie from around age 15. Records are sealed, but the pattern is what you'd expect. At 18, a judge gave him the choice of joining the army or doing jail time. Burkhart thrived in the army. After graduating from Ranger School, he deployed to Iraq with 3rd Battalion in 2003. He finally found his place and was looking to make the army his career. And then in '05, his patrol hit an IED in downtown Ramadi. Burkhart didn't take to civilian life. He couldn't keep a job for more than a couple of weeks and started having run-ins with the cops again. Started telling anyone who'd listen about how the army fucked him over. Eventually, he started spending time over the border in Juarez. God knows what Burkhart was looking for down there, but eventually he crossed paths with El Muro, head of Santa Blanca security. They share some beers, maybe some blow. Burkhart gets to talking about his army days. El Muro is impressed. He knows the real thing when he sees it. He asks Burkhart to come to Bolivia to train the cartel's army in the Montilluk province. El Muro wants him to be the best force of its kind in all of South America. And Burkhart is just the kind of man he's looking for. The kind of man who can run combat drills, show a bunch of morons how to field strip a G-36 in 2 minutes flat. The kind of man who can turn narcos into elite soldiers.
सिक्योरिटी वाला तो नहीं, ये आखिरी का बचा इधर 5 की सिक्योरिटी है इसकी पूरे लेवल की हाई सिक्योरिटी इसमें तो एक ही है और इसका हमने 4 मार दिए वो ज़्यादा जबकि इस वाले की थी सिक्योरिटी 5 इस वाले में तो बहुत टाइम लगा था दिवाली में क्योंकि इधर ना हाँ ये लगा ये पूरा लगा था ये पूरा जो भी है ना एनजीओ करके पूरे में बैठे थे और लोग तो भरे मेरे साथ में उस भरते जो भाई हम को ना पहले इन लोगों का ये देखना है क्या चीज़ है और फिर मैं उधर निकलूंगा पहले गाड़ी लेके पहले करते काम मेरी गन काम करेंगे मेरे पास मैग नहीं है क्या इसको होने चाहिए यार क्या मेरा काम करिए मैं इसी यही मैगजीन तो है ही नहीं मैगजीन मिलेगी कहाँ क्या पार्ट्स है मेरे पास ऐसे इसकी मैगजीन आई है 20 वाली अच्छी बात है ठीक है भाई ये लगा रखते हैं ये तो मुझे होल्डिंग ज़्यादा वेटेगा दोबारा ना कुछ पता नहीं करना ठीक है जो भी है Sure are a lot of lights and switches up here. तो देखना होता है करेंगे वाला All right, good to go. इधर का एमपीसीज का पता नहीं चलता कि ये लोग दो गाड़ी गिरा रहे हैं नीचे क्यों गिरा रहे समझ में नहीं आता मेरे को करके क्या है ये ओहो ये है चीज अरे खाना एक देखने का मतलब अरे को कहीं नहीं कहीं ये बात नहीं सुनी अच्छा क्या चीज है ऐसी ओके अच्छा ये तो बॉर्डर पे इसकी चल ठीक है पहले चल के फिर से मुँह उठाते हैं तो पूछ जाओगे डायरेक्ट 200 मीटर दूर है डाउनवर्ड पानी का आने के लाले पड़ जाएंगे वहाँ से अगर मैं बिना इसके देखते हैं तो खास कर घर है कौन रहता है बाहर आया नहीं आया हूँ मैं उससे किसकी गोट की 2-3 दिन We've got a positive ID on the cartel senior instructor, a former army ranger named Carl Burkhart. The guy broke bad when he went to work for the cartel. Now we've got to eliminate him. He's done this for -2. Okay. अबे अभी भी तो जस्ट मैंने इससे पहले पंगा करा था जब बहुत मापा इन लोगों को मैंने लिटरली भर दिया था इनमें तो मैंने और मैं चाहूँ तो ऐसे बिना किसी दिक्कत के घुस के मार दूँ Closing in on Burkhart's last known location. Wait.
खुद मार देंगे भाई क्या He's dead. खा लेते मैंने सारे और काम मानिए क्या कोई Closing in on Bookhart's last known location. You really gonna do this, boss? Kill one of our own? Bookhart stopped being our brother the day he went to work for the cartel. You see him, you take him out. No hesitation. okay ओए इतना बुरा नहीं कह सकता मैं नाइट विजन ऑन कर दे रहा हूं Jesus, it smells like a slaughterhouse in here. The hell kind of training is Bookhart doing? The first thing a Sicario recruit learns is what it's like to kill a human being. They bring in prisoners and make the recruits take turns on them with hammers and machetes. Sometimes it's men, sometimes women, sometimes it's little kids. Hold up. तीन को मारो बहुत बुरा खेलता हूं मैं तो एक ये MK40 हटा के फिर लाइट मशीन गन लगाओ इसको देखो कुछ करने लगा अभी मारेगा तो इसके साथ कोई जल्दी LMG लाओ मेरे लिए लाइट मशीन गन कहाँ है लाइट मशीन मेरी कहाँ है मेरी पता नहीं है क्या अबे मान इसका वेट कर रहा है कोई नहीं Find some fucking cover. बाहर से राइट से दिखा रहा उधर तो 26 मीटर वापस चल रहा तो वापस बड़ी वाली गाड़ी लेके चलेंगे हेलीकॉप्टर भी लेके चल सकते हैं लेकिन Let's go. बड़ी वाली गाड़ी नहीं है दूसरी गाड़ी नहीं चला रहा ज़्यादा घूमती है वो अच्छा ये दूसरी तरफ भेज रही है हमको बिना इसका दूसरा गेट है बिना जिस साइड का गेट है Fuck, Bookhart made me. He's on the run. Come on, operator. Get some. See how dumb you are. It's over, Bookhart. You're done. ये बहुत बेकार नहीं मुझे निकल थोड़ी मेरी गाड़ी इसमें सारे पहिए लगा रखे हैं किसी लगा रखे हैं Fucking hell! हाँ यहाँ पे लेफ्ट में होगा ये क्या भाई दम है क्या है तेरे अंदर दम नहीं चलो चल चल चलना तो छेद नहीं खुला नहीं इधर अभी इस साइड तो था गेट था मैं पिछले एपिसोड में शायद आया था इधर शायद नहीं आया तो पक्का था लेकिन गेट इधर ही कहीं था तो अच्छा सामने भी जाना पड़ेगा उससे ये ठीक है अपना सामने से लेके अंदर कुछ एक रास्ता दिख तो रहा है देखते हैं कौन सा रास्ता कैसा रास्ता है ये गाड़ी अच्छी लगी खाते ओह भाई जमीन में सब खोल दी Engaging tango. Next to the container. अभी हम यहाँ पे सफाई करके रहे तो बड़ा सा गंदगी है वो तरीके हमारा रिफ्लेक्ट थोड़े धीमे हो रखे गाइस कोई नहीं टाइम टू टाइम बढ़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है God damn, Boosh, tango down. अबे
पीछे से फाड़ रहा है ये बिल्कुल वाह I got you, Master. Hang tight. I'm heading your way. पीछे से देख के चला गया गोली भाई खड़ा हुआ है उसका नहीं रहा वो तो खड़ा हुआ है Heads up, we got a turret. इस है ये You spotted one with submachine guns. We're coming this way. What do you want us to do? अरे नहीं नहीं था I asked the rebels to recon this area. Transmitting intel on enemy position. Ya sabemos dónde están estos culeros. Vamos acercándonos. Fuck, made. यहाँ पर तो नहीं जाओ फोन मैंने क्या देख नहीं मारा हुआ है मेरे को 21 सेकंड है क्या चलाओगे क्या अकेला गोली मारेंगे तो ना कोई बचाने वाला मिलेगा Aguas, nos están tirando sus puntos del sur. Lléguenle con la patrulla. Quédense donde están. Tenemos apoyo de los cuerpos del pueblo. Está en camino para llegar a donde... Enemy reinforcements Call incoming. Torrey for some reinforcements. Copy that. A fire team will be right there. I called the rebels for some indirect fire. We copy. Fire for effect. Out. ओके यहाँ पे मिलेगा Copy that, Jack. Troops are moving into position. हाय अभी वैसे भी वेट करेंगे ओके मैं चाहता हूँ खाला पूरी कर सकता हूँ अच्छा हाँ हम लास्ट टाइम इधर आए थे ना नीचे जाने का रास्ता तो नीचे बहुत बड़ी जगह थी बट अपना कोई काम ही नहीं था उधर तो अपन गए नहीं थे गाड़ी तो कर भी देखो और मार भी देता अपन गोला बारूद की बारी आ गई गोला बारूद Heads up, we got a turret. The baby makes 3. गोला बारूद तो गोला बारूद में खड़े सही नहीं है चलो बड़ा मन और दूसरी निकाल I have got eyes on Bookhart. Target marked. Okay. Deploying drone. Heads up, we got a turret.
Shit, they're headed this way. What should we do? We got him. Bookhart's dead. Hell of a way for a ranger to die. Bookhart chose this, don't forget that. We did what we had to do. Good work in Montauk. Losing Bookhart's gonna have a major impact on the cartel's training program. Santa Blanca's best troops are going to be stretched thin to try and cover for the loss. It'll compromise their security and get us one step closer to El Muro. Damn right. The cartel's been calling the shots in Bolivia for years. Now, finally, we're starting to push back. हाँ देखो मैंने तुम्हें बोला था ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ से एक रास्ता ये रास्ता है ये पहले ये वीडियो देख लिया क्या सीन है कैसा इसका El Mudo was going to try to kill me, just as I was going to kill him. Black is for vengeance. White is for safety. Gold is for success. Ahora, I ask you, how can any saint grant contradictory prayers from two different men? It has been my experience that gods always side with the man who has the most money, the most men, and the most power. I had lost the one man I could always trust, mi hermano. How many men would be more loyal to him than to me? How much power would he take? Would that be enough for him to take me out? I would always have an advantage, though. I grew up with the man. I knew how his mind worked. I knew his next move before he did. I just had to be patient. What else? अब लगता है अपन को इसकी जरूरत नहीं है हम गोला वाला मार लिया ये अपन वहां से ऊपर से हो गए थे साइड से अपन को डराना था चलो कोई नहीं I asked the rebels to send over a vehicle for us. Okay, we got your helicopter. हेलीकॉप्टर को ऊपर देता है इसमें ये कहाँ फेंका ये फेंका हेलीकॉप्टर ओके 200 मीटर दूर फेंका बट कोई नहीं लेवल है मैं एक पर ये डर गया था कि कौन है ये गन दिखा ना ये फैक्ट्री आई थी ये और कैसे भी से और एक और आई थी कहाँ गई है हाँ ये ना ओके सप्रेसर के साथ जाएंगे तो किसी का है नॉइस रिड्यूस भी है बढ़िया This time here. कोई फायदा नहीं ये कम से कम कितना 100 मीटर भी नहीं होगा वो सब पहले उसका वो नहीं करता कोई फायदा नहीं है अरे मैं क्या करना चाहता हूँ क्या हो रहा है ये इस बंदे का डैमेज थोड़ा ज्यादा है बस बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है गन तब तो मैं इसे वो भी नहीं कर सकता ना कर रखा है क्या मतलब मैं बना लेता हूँ हाँ यही है उनके नीड ही नहीं है उसे I'll pilot. और वही बात इसको पकड़ते हैं तो पकड़ते इधर बन देंगे चलेंगे चलेंगे तक ओके
किलोमीटर कट जा रही है। अवेलेबल फोन नहीं मेरे पास। LMG का है। We got a chopper coming in. Opening fire. और ले बातें में चढ़ा के चला गया वो तो। ये Hang in there, I'm coming to you. Thanks. Sniper. Let's go ahead and loot the truck. We're clear. क्लियर भाई। और ये सीधा इस तो उस पर लग गया। वाओ Ready? Open fire. Roger. That's the tango. ट्रैक्टर कहाँ फंस गया? ट्रैक्टर तो बच गया जहाँ से भगना था। नया वाला हेलीकॉप्टर लेके चल गया, पुराना वाला नहीं। Let's haul ass before that thing blows. अबे चला नहीं लगा मैं। क्या आ रहा है ये? Hang in there, I'm coming your way. Fuck took you so long. Sniper, get the fuck down. ये यार मेरे को फिर इधर से जाना पड़ेगा चलते 4 किलोमीटर। ये मामले शांत करके सीधा वहाँ यहाँ से वहाँ तक वो मारेंगे जंप। हो जाओ या मामले शांत हो जाओ। और हम अभी तो चाहिए नहीं है। ऐसी डरना सिया था, इसे ही मार दिया, इतना तो मार दिया। ठीक है अभी अपन ने वो कोई मारा सिर्फ ये बुद्धा नहीं मारा। ये अभी कहाँ है ये? कौन से कोर्से में घुसा पड़ा है बुद्धा? यहाँ से जिस दिन दिखा उस दिन बहुत मारूंगा। ये तो पता नहीं है बट ये वाली जगह खुली पड़ी है अभी। तो सोच रहा पहले इधर चले जाए, इधर जाके इन दोनों को लेके फाइट में आ गया भाई मैं। अभी तो शांति They're coming this way. दूर भागने दो। Shitballs. दूर भागूंगा तभी काम चलेगा। मुझे पता है मैं तो एक है दूसरा मारू Scratch one. अरे लग गई। बहुत बेकार है इसके।
बे हेड तेरा कहाँ है? छुप गया क्या है? We're good. We all in one piece? ये कौन था? अच्छा, ये अपना बंदा है। मैं तो चढ़ा के मार रहा हूँ ये। अवार्ड है फास्ट ट्रैवल का टाइम। ये हाँ, नहीं हॉरिजॉन्टल वाली में कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना? वर्टिकल वाले में देख रहे हैं थोड़ी बहुत, एक दो अब कोई नहीं। अभी तो टाइम चलेगा, ये काफी चलेगी। हाय मैंने बॉस नहीं लगाने पड़ेंगे हम। बॉस लगाऊंगा। तो इधर ये जो भी I'll drive. To the market, Jeeves. ओके, पहले मेरे को इनसे आगे निकल के ना एक झटके में मारना था, फिर वो गोला बारूद का यूज करना पड़ेगा। अगर फिर मेरे को नॉर्मली मारना है कोई दिक्कत नहीं है। अरे पीछे से Escort car destroyed. Helos, escort vehicle is trying to get away. Escort car has been destroyed. अबे मेरे को कुचलते हुए तू जाता भाई, कुछ दिक्कत है गई तेरे में ना? हाँ भाग रहा हूँ गाड़ी का ना अपनी जिंदा है। चलो उसी गाड़ी का पीछा करेंगे इसका। 500 मीटर के आगे जाना चाहिए, वरना मिशन फेल्ड हो जाएगा, बच के निकल जाएगा। ऐसा सीधा हम जा रहे हैं तो हम आगे कुछ खरीदेंगे तभी। कहाँ भाग रहे हो? पूरी जान लगा कर आते हैं। Ready? Fire, fire, fire. Copy. I'm engaging takeouts. That LT's getting away. Watch your step. These guys know something's up. और फ्रंट रेंज मिलूंगा। भाई मार दो। Fire. We'll go. ये भाई कितना भगाएगा ये चीज। अब टकरा गया, अब टूटेगा ये। क्या हुआ ये? That's it, we're clear. आग लग गई यार। कितनी दूर आया मैं इसे बचाने के लिए, ये आग में झुलस गया। Secure. Rebels can send a team in later to retrieve it. Let's go. ओके, मैं इधर से हुआ था, इधर से बढ़ते इधर तक आ गया। वाओ, ये क्या इंटेल है यहाँ पर? Go. We got Unidad coming in.
ये लड़को क्या कर रहे हो? आ जाओ। मैप देख लो नीचे, मतलब वर्टिकल वाले में नहीं दिख रहा होगा। God damn, that was close. सारी गाड़ियां हैं इधर। ये दिग्गाम यहाँ पड़ा है। मैं इस तरफ जा सकता हूँ, उस तरफ से कोई जा सकता है। ये क्या हुआ? एक इंटेल है, एक इंटेल निकाल लें वहाँ से। गाड़ी तो चलती जा रही है। Got any chiz made by the cartel or the Sicarios? Gracias. सारी चीजें मुझे तो सारी। और मुझे यहाँ पर ट्रेन यार्ड पे जाना है। नहीं मैं उधर से क्यों भाई? ये ट्रेन यार्ड का ये जा रहा है ना पूरा उधर। तो मुझे जाना क्या दिक्कत है? अरे पागल। स्पीड में पकड़ दिया वो कहाँ पर है? राइट से निकल दो पहले। थोड़ी सी स्पीड में जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अब ठीक है, तो हम सीधे सीधे तो जाएंगे। और एफिशिएंट ठीक है। इंटेल है इधर कोई? Ready? Open. Going on. Roger that. Their lieutenant's running away. मार पहले। गोला बारूद मारे भाई दोस्तों। ऐसा लुटेनिस मर गया तो ऊपर ले कम तो सोता है। उन्हें लेके जाओ कहीं बाहर। Está bien, ganaron. वहाँ पर मेरे को इंटरव्यू करने से कोई दिक्कत Got some questions for you, asshole. I got you, vato. नहीं। Just don't tell nobody where you heard this shit. यही बात इधर मारा मारी थी। I asked the rebels to do a put a call to the rebels for some reinforcements.
नहीं Take cover. उड़ी बाबा ये ला गया Hang in there, I'm coming your way. लो बल्कि चलते फिरते हाथ साफ कर दे रहे भाई लोग Thanks. समझाओ नहीं अच्छी बात नहीं होती तो तेरी सारी इधर होंगे क्या लेते I called Pakatari for some mortar fire. तेरी उसने भी ये मार दी बड़ा वाला मार बताइए मान नहीं पाया ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Snipers out there. They're gonna be on top of us in another few seconds. What do we do? ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? Tenemos a I called the rebels for reinforcements. I'm asking the rebels to draw their attention. हाँ बस Unidad bird on patrol. Watch out. कितने भी आ जाओ अब तक पिटेंगे अच्छा इसे बीच में कौन है वापस 10 मिनट नहीं है जब और 12 दोनों की जगह है 6 मिनट रहते तो दिक्कत हो जाती है यूनिट चला गया नहीं पर एक पीछे इसे मारना पड़ेगा ये बचा ले भाई Fuck took you so long. मारना ना मार देना फिर रास्ता कहाँ जा रही है जाम है का क्या फायदा चलिए Hey, found a Santa Blanca medal. This will make a nice souvenir. ये अजीब सा क्यों दिख रहा है ये वो भी सीएम को अच्छा करने लेते I'm calling for indirect fire. I asked the rebels to recon the area for us. I call up the rebels to draw their attention. Clear. है तो नहीं मेरे लाइफ नहीं देखिए यार अपनी कोई अपन केस पड़ा है उसे लेके निकले यहाँ से फिर अगर इधर कोई मिशन मिला तो इधर आके दोबारा लेंगे मारामारी कर लेंगे तो पता चल गया है कि कहाँ पर है ये क्या चलेगा नहीं Get away from there. अभी भी निकला तो ऊपर से रास्ते दे रखे हैं किसके I've got some light panels here. अबे यार यहाँ पे इतने ऊपर मैं फालतू नहीं चलाऊँ ऐसे रास्ता है मैं वहाँ पे फालतू में ही चला था There's a weapons case over here. I've been wanting one of these. अरे भाई यहाँ पर पूरी वही लेके घूम रहे हैं I asked Pakatari to send us a vehicle. अरे हेलीकॉप्टर यार इधर ही होंगे का तूने इन्हें क्या चुरा ले यार निकलना बोल रहे हैं तो हेलीकॉप्टर का उनका हो रहा है प्लीज
थे, ये तो मिल गया ये, और ये चलाने का बट एक और पहले फिर इस घर पे हो मिसाइल वाला है। बहुत मजा आएगा इससे बदमाशी करने में। अकेला जाके यार अपग्रेड होनी चाहिए थी ना। अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, अपग्रेड कर सके बंदा आराम से। ये रहा आउटपोस्ट है कोई नहीं। I got it. I'll fly. You really ought to let me drive. यहाँ पर मारूंगा ये। The alarm seemed to sing. Reinforcements moving. I have a shot. Engage. Oh, here we go. They've seen us. Get away from there. Move. ओके फटने वाला ये। अले ग्लिच, ये ग्लिच है ये मैंने यूबीसॉफ्ट की तरफ से डाउनलोड करा है ये। फिर भी पायरेसी नहीं है ये गेम, फिर भी देखो ऐसा सीन होता है इसमें कभी कभी। अब ये जाते रहेगा जाके ना खुद ही नीचे जाके मर जाएगा खुद ही इसमें। तो जा रहा है ये मर गया बस। फिर दोबारा ये सीन है भाई। तो पता नहीं क्या कौन चीज है, समझ नहीं आता मेरे को इसमें क्या करते हैं ये लोग। बट ये ना मेरे ज़्यादातर गेम्स में तभी शुरू होता है जब जैसे एनवीडिया का वो दुनिया का के साथ कुछ अच्छे करने का वो यूज करता हूँ, तो मेरे साथ ये सारी चीज़ है। तो ये मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऐसा हेलीकॉप्टर लेना सीखा नहीं जा सकता है। I asked the rebels to send over a vehicle for us. देखिए बहुत दिक्कत आ रही है ये सबका बस जो तो भाई 25 देना तो लोग यही होगा। असैसिन नहीं खेली ना, असैसिन खेले मेरे को। असैसिन शैडो और आउटलॉ भी है ना, स्टार वॉर्स आउटलॉ करके है वाली। मुझे लगती है कि है तो ये Ready? Fire. We rattled somebody's cage. Their LT's making a run for it. Gringos, hijos de su puta madre. Métanles la verga a todos esos putos. ¡Mátenlos! They're made. अबे जो ने मेरे में दे मारा। ये लाइक बंदे अरे तेरी कितने लोग हैं, कितने हैं इधर?
आती है Pinche cabrón. ¡Paz, bis! काम करनी है तुम आगे से अभी ये सब ले रखा है Well, that was messy as shit. बट ये बार-बार मिशन देते हैं I asked Pacatar. इन्होंने बार-बार मिशन देते हैं जान से देते हैं मिशन ये मैंने कर रखा है जैसे कि मैंने सारा उठा के एक ही उठा रखे हैं फिर होंगे ना जो सारे मिशन तो दोस्तों प्रैक्टिकली लेके क्या फायदा मैं वैसे पास कर करते हैं तो निकलता है क्या I need you there. I copy. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Let's roll. I'll catch up with you. What the shit? That's Pax right closer. चल के चला गया वो मर गया I'll fly. ये जॉब दिख रहा है ये क्या उधर है क्या उधर Fire. Copy that. पता है ही नहीं क्या तो हम कार करेंगे We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. डालना पड़ता है ये तो आज इससे सेव होता है चीज़ ना और इधर का कोई मिशन ही नहीं है भाई नॉर्मल मिशन करके बात खत्म करते हैं तो उनसे यहाँ जाना वहाँ ये लाना बोलना और कुछ चीज़ें ना क्या करते हैं खासकर इस तरफ के मैच में I'm on. Okay. Yes, sir. Okay, अपन को बोले क्या ना आगे से लेकिन यार ओहो ऊपर जा ही नहीं रहा ये तो Signed, sealed, and delivered. Now the rebels can come claim it. Hope they make some good use of whatever's inside it. I'd hate to.
एक गन है ये। गन तो मुझे चाहिए नहीं, बट ये क्या है? ये सब प्रेशर है, ये किसी काम का नहीं अपना। ये किल पॉइंट के कोई फायदा नहीं अपना लेने का। क्या इधर मैगजीन, एसएससी मैगजीन 7.5 की है मैगजीन। इसमें कौन सी लगती है? कैसे पता चलेगा भाई? यहाँ पर दिखेंगी मैगजीन भाई, मैगजीन स्टैंडर्ड। Think we came all this way for nothing. पूरा अरे चखनी। Ready? Fire, fire, fire. Copy. ओ भाई टीम फ्लोरा टीम में टीम निकले। वाह अगर ये 3 फ्लोर स्टार्ट हो एक ही। Bad guy heard the shot. He's looking for the source. I asked the rebels to do a recon of the area. Tamales todos agachados, cabrones. ¡Nos están atacando! Keep it quiet. They know we're here. I'm engaging tangos. ओके चलो टीम फ्लोर का बढ़िया। The kink of the cartel's comms will give the rebels a reason to grow some balls. ओके कहाँ है ये? ¿Qué chingados esperan? Good shooting. Let's clean up and move on. ओके इधर तो कोई नहीं है। हम नीचे तो अपने खोला भी नहीं है। ऊपर की जाना पड़ेगा। तो ये भी रास्ता, अरे भाई चल। फायरिंग का है क्या? नहीं फायरिंग का है, कोई फायदा नहीं है। और ये इसका चिवाने का है, फिर क्या था? स्किल पॉइंट है बस। जगह फालतू के निशान है सारे। वहाँ पे गन मिलेगी, गन भी थोड़ा ज़्यादा। तो फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या? 25 है मेरे पास, ठीक है। तो स्क्वाड का जो भी है टाइम प्ले आउट, तो ये तो बढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं ये किसी काम का नहीं अपनी। स्क्रीन 4 से और ये है ना, ये तो एयरक्राफ्ट वाला तो पूरा हो रखा है। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। चलिए 7 है, 7 में से एक दो ही पड़ेगी क्या ज़्यादा। ड्रोन में क्या है? बैटरी एक्सप्लोजन बहुत ही क्या और अब क्या बढ़ेगा? बैटरी बढ़ सकती है।
मेरा स्टैमिना और ये नो पेन नो पेन चलो ये सारे कर लिया अपने है मैं बोलूँ इस जगह पे छोड़ के ना इधर किसी दिन खाली टाइम करेंगे फायदा नहीं है अभी करने का ना अपन किसी ऐसी जगह जाओ जिसमें हम आगे दूसरे पे जैसे कि ये इतनी बढ़िया है जिसमें आगे हम दूसरे पड़ेगा हाँ ठीक है बहुत बड़ी सिटी है बहुत बड़ी तो पहले ऐसे करके आ गए फिर आगे में घुस गए अपन लोग अब थोड़ा और घुस जाएंगे तो क्या दिक्कत है चल घुसने घुसने की बातें कर रहा हूँ कहाँ घुसने से ओके तो पहले ना करके पहले मैं ड्रोन से Drone is airborne. क्या है ये ओके यहाँ पर तो वैसे ना इनकी चीजें मिलेगी मतलब अभी पता कर पाया जब ओके ओके क्या पता नहीं कर सकते अपन यहाँ हाँ पता कर सकते हैं और होंगे ओके 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 आधी चीज़ें पर ये पता कर लिया तुमने तो ये क्या है ओके 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 ये तीन सारी चीज़ें पता कर ली जो जो भी चीज़ें थी इधर ठीक है ना तो अपन सबसे पहले चलते हैं इधर नहीं इंटेल है ना पहले मैं सोच रहा किसी इंटेल को पकड़ूं जैसे कि ये रहा ना जैसे मैं उधर जाके किसी इंटेल को पकड़ूंगा ना तो वहाँ पे एक चीज़ फायदा होगा I'll pilot. I'm on. दूर के आसपास ये चीज़ें ना सारी का चीज़ है I got eyes in a lab over here. We should get Bowman on the horn before we turn that place into dust. Right. I'll give her a heads up so she can get to finding the next one. Open fire. Opening fire. Copy that. Bowman, you found one of the pyrolusite labs. Good work. Now that we know what they might look like, let me see if I can find any others in the area. And there it is. Transmitting the new location to you now. I called Pacatari for some reinforcements. I called the rebels for a diversion. I asked the rebels to recon the area for us.
Chopper incoming. They're coming right for us. Skill points. No skill points ले लो ना. मतलब मैं सीधा आ नहीं सकता है और इधर बाहर नहीं जा सकता. पहले इसे मार दूं मैं कुछ करेगा. Fucking smoke the helo. हाँ बिल्कुल. कौन मुचल्ला ले. अच्छा ड्राइवर्स भी आ रखे हैं इधर. Alarm over here. We're अरे clear. मैं सोचूं फिर कैसे अच्छा क्लियर भी होगा. The alarms. Reinforcements won't be हाँ flying in. चलेगा. Looks like a lab up ahead. ये ड्राइवर्स ने पूरा काम आसान कर दिया. क्या ये मिशन निर्वाह मिशन क्या ये? Take out the 2 labs that are refining pyrolusite for Santa Blanca. Their loss will set back the cartel's cocaine production for months. तो वो तो ना मेरे को इधर बुलाना पड़ेगा. Rally up, people. Roger, moving. Move there. Roger that. Lab destroyed. On to the next one. क्या इसलिए डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है. ऊपर भी रास्ता है क्या? तो हाँ अपना कोई काम नहीं है. काफी बदमाशी का लैब खा गया हूँ एक मार्केट पे और दूसरी जगह. नहीं ये रास्ते में ये पड़ेगी ना पहले इसी के पास चलता हूँ. ओह बुलेट है भाई बुलेट है. You fuckers trying to lose me? I've got the bike. Closing ranks. Clear out. I'll meet you there. ये चुपचाप से ना अरे चुपचाप से भाई गाड़ी रोड पे चला दे. Go ahead, I'll meet you. भिड़ा लगाता है. अभी भी कुछ नहीं हो सकता भाई. हाँ मेरे को ऊपर नहीं दिख रहा भाई. क्या दिखेगा? Hold up. We got hostile activity. Eyes on 2. Dead soldiers. अरे जा बढ़ रहे ऐसे जा रहे जो भी इंटेल है ये जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं. भाई मैं सोचूं तो मैं अभी इसी जगह था. ये आगे बढ़ते जा रहा है. ये कोई नहीं टेक्नोलॉजी आई था. मैं उसके घर में घुस जा रहा है. Go ahead, I'll catch up. अब लगते हैं तो मैं सोचा एक है पीछे मुड़ा और पीछे मैंने देखे 4 बंदे 3-4 जगह है. भाई मारेंगे तो बहुत मारेंगे. Thanks. Engaging hostile. Fucking hell.
अयो भाग रहा भाई. A todas las unidades, comiencen el ataque. Put a call to the rebels for some reinforcements. ¿Qué haces? Got any chisme about the cartel or the sicarios? Gracias. Tango mark. He's a little quick. Nuestras tropas han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. He's down. और भी आगे क्या? क्या हुआ इसको? हेलो? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो? क्या हुआ? अबे भाई मूवी खोल ले थोड़ा सा. नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है. कुछ है इंसान को. Hang in there, I'm coming to you. Wounded that bird, on patrol. Watch out. Fucking hell. नहीं भाई अब इनको भी मारना पड़ेगा क्या? Helo's done. क्या आतंकवादी बन गया पूरा. अच्छा हाँ ये तो दे रहे हैं इसको. इंटेल पहले इंटेल पकड़ के उसके बाद काम करेंगे आगे का. Out of the car. Net. I suppose that's what passes for an Unidad recruiting station. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Pedimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Roger. Opening fire on these fuckers. एक से इनका निशान नहीं लग रहा हुआ. Get the fuck down. I just requested a rebel recon of this area. Boy. Call for some rebels to back us up. I put a. You Yankees call. कैसी जगह है यहाँ से देखो वहाँ से निकल आओ. ऊपर कैसे जाते हो तुम? Yo, I got a weapons case here. Where? Hello. Interrogate. And in our top story tonight, bloody riots have broken out in the streets between local cocaleros and miners originally hailing from Barbechos. According to police reports, the miners who are working Ah, in I could use this. machine gun लगेगी ऐसी ना. कोई फायदा नहीं है. Ass pack guitar. इधर ना मतलब वो करने का कोई फायदा नहीं. अगर जब तक इंटर नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं ढंग का काम. अब देखो जब 3-4 टन मिलेगी और यहाँ पे. पर मैं यहाँ हूँ. हेलीकॉप्टर लेके आना सीधे यहाँ पे जाऊँ तो भी टाइम लगेगा. कोई नहीं. पहले इधर वाली इंजन को निकालता हूँ यहाँ Alright, से. to send us a vehicle. मारा निकले वाला ही है बढ़िया.
जो यूनिट है ना वो एंडेड करके दे वो लोग एक दूसरे में मारामारी कर लेते हैं कार्टे से पंगा कर लेते मैं देखा वो आराम से कार्टे भिड़ रहे हैं जिसके में बना के सही से मतलब बेटी है अब नजर आगे आएगा Airdrop's तो stuck ये over there. Need to get there before the cartel takes it. आगे ले लेते हैं I'll alert the rebels so they can collect this. Good work, team. Next time, can you tell them to get their own fucking groceries? मैं दूसरे वाली देखूंगा दूसरे वाली में चलूंगा मैं वर्टिकल पे दिखा रहा हूँ सेंट्रल वाले में मैं चैट कर रहा हूँ उनको करूँगा मैं देख ना पाऊँ Spotted one with Opening fire. These heads is how to disrupt the fight. Fire. Enemy. Keep your eyes on the road. You just hit a civilian. फिर कहाँ कर रहे हो? अरे लेवल्स ये क्या ये कौन सी हरकत है? तो एक टाइम पे मेरे को बचाने आते हैं उन्हीं लोगों को कुचल दिया। इतना बुरा हूँ मैं। Got something here. Looks like the local boss is a guy named Elway. He has a house in a place called Riverine. Let's check it out. Bowman. The name of the buchon in Villa Verde is Elway. Elway? We know him. I wasn't sure he was in Villa Verde. He's in charge of processing the pyrolusite into the chemical used to purify the cocaine. An Unidad lieutenant named Bento caused an accident in the processing plant that burned Elway's fucking face off. Oh, so he's easy to spot in the crowd. When the bandages came off, Lieutenant Bento made fun of Elway's hamburger face. Elway went after him and almost started war. Sueño had to step in. That sounds like a great lever to pull. Frame Elway for the lieutenant's murder, the war starts up for real. I'll send you some intel on Elway. Bowman out. Bowman just sent us a video starring none other than Bolivia's butt-ugliest comedian, Elway. Sure to be a barrel of laughs. We got the address for a cartel network. This is Elway. Real name, Pedro Gil. And I know the first question you're asking. What the fuck happened to him? You know what pyrolusite is, right? Yeah, neither did I. Pyrolusite, key syllable pyro, by the way, is the shit they mine in Villa Verde province to turn coca leaves into high-quality cocaine. So what, you ask? Elway's father was a miner. His grandfather was a miner. His grandfather's father was a miner. Basically, Elway didn't have many options until El Boquita came along. You want to make some real money? Turns out he wanted to make some real money. Turns out, in fact, he was ambitious. Elway wanted to improve pyrolusite to produce the best cocaine the world has ever seen. Ever hear the expression, it blew up in his face? According to our sources, Elway is a generally affable guy. Good to his workers, cool with Unidad. Just don't ever, ever make a joke about his face. And in our top story tonight... Let's get on it. Take out the 2 labs that are refining pyrolusite for Santa Blanca. Their loss will set back the cartel's I cocaine asked the rebels production good for shooting. months. Clean up and move on. Okay.
go. I'm in. Let's go. क्या हो रखा है तो इतने सारे हेलीकॉप्टर इतनी सारी गाड़ियाँ जंगलों में जाके लोग रहने आगे रखता है हाँ पता नहीं तुम्हें मेरे को मजा आता है तुम लोगों को मजा आता है जान लगाने गेमों में खासकर गेम्स में खेलते खेलते जान लगा देंगे गाड़ी खड़ी कर दो Fire. ना कोई आएगा ना कोई जाएगा Engaging tangos. We post the hornet's nest. A partir del ramal con puro pinche cañonazo. Háganlo ahora. Vámonos, cabrones. Hay unos pinches soldados aquí, merito. ¡Llévense a todos esos putos! They've seen us. Get reinforcements. हाँ Got that क्या fucking क्यों मत कर लो क्यों मत Clear. That's it for any easy pyrolusite refining around these parts. That should put a nice crimp in Elway's career. Not to mention the cartel's supply chain. Sounds like it's cervezas time. बहुत ज़्यादा वाइट हो गया I asked the rebels to recon this area. We got a lab up here. I'm having a college flashback. Maybe I can work on my aggressions against my organic chem professor. Who wants to fuck with the cartel by hijacking a supply chopper and handing it to the rebels? That's a double win for us. यहाँ पे ना ये सप्लाई क्रेट्स में डाल के जाना पड़ेगा कितनी जाएगा सप्लाई क्रेट में सारी पर है हाँ We're good. We all in one piece? Whoa, fucking guy's got an 80. These supplies will buy us. Okay, हाँ A lot of goodwill from the rebels. कैसे रोकेंगे नहीं आ रही है सर्वे कर लेंगे I asked Pakatari to send us a vehicle. जाम में तुमने फंसे बोले कहाँ पर तुमने इतना अच्छा खाली जाम लगा के आया था Copy opening fire on these shitheads. इतना करके चलते हैं
धक्का ही मार दो उसे। Escort destroyed. Okay. Well done. I'll have the rebels come pick तो this फोन stuff में up. पहले पहले उसे I requested a vehicle from the rebels. ऊपर ही छोड़ देना भी जाके बस। ओके एक तो वो भी खाने और फोर मिला ठीक है। ये ना गाड़ी वाले के पहले वो निकाल के फिर चलने वाले। All right, I'm in. Good to go. पहले मतलब जो चीज़ है वो सारी निकलवा ली तो No idea where we're here. आई बटन नहीं आएगा। Ready? Open fire. Roger. Firing. Looks like we've riled them up. Shit, he spotted us. Oh shit, here they come. उनके जो स्किल लगा दे। Esos hijos de su pinche madre están al este. Están fuera de nuestro alcance. Check this out. The head of the miners' union in Villa Verde, this guy named Chango, flat out hates how the cartel treats workers here. Sounds like we have a lot in common. Bet he'd be happy to lend us a hand with fucking up their pyrolusite supply chain. I just requested a rebel recon of this area. I called the rebels for mortar fire. I called the rebels for reinforcement. ये उसके नीचे सारे लोग हैं और इसके बाद में एकदम पक्का गई तो सब कुछ दूर है। Fuck took you so long? Hey, we need to get going. The clock is running down. बहुत ही बेकार। ये ऊपर घुस के नहीं कर रहे क्या लोग? कुछ क्लियर कर लिया सब। अरे मेरे को भी तो खा दो। जल्दी 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 आ जाओ। 2 से 3 सेकंड चलाएगा।
हाँ ये नीचे ही है। Thanks. Shit. Gotta be faster than that if we want to shut these fuckers down. मैं जाऊँ या पहले ये ऊपर है वहाँ। अब तो ये नहीं मिलेगा। अब ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ऊपर ही होता, ऊपर ही होगा। चलो इसकी तरफ चलते हैं। हेलीकॉप्टर लेके रखते हैं, जैसे फिर कराएंगे एक बात चलते हुए है ना? We need to find a way to drive a wedge between Away and Unidad's Lieutenant Bento. See what you can dig up. Sure are a lot of lights and switches up here. Let's ride. अब है क्या किल हो गया? वो कैसे किल हो जाता समझ नहीं आता। मैं गाड़ी की घटना चलाता हूँ और रात को अपन 10 बजे करेंगे भेजना मेरा स्क्रीन। अभी तो 4 बजे 9 बजे बंद कर देंगे। रात को कर देंगे। ठीक है मैं काफी दिन करेंगे लेकिन देखते हैं। और मेरे पास वो भी तो नहीं है ना। मतलब वेबकैम में चला नहीं सकता, अभी चालू नहीं कर सकता। ऐसा करनी है मेरी। The drone is up. Heads up, we got a turret. Roger that, moving. Target acquired. Let me get into position. Tango number 3. Eyes on the target. I got eyes on Heads the up, we got a turret. I got a target carrying submachine guns. Let me get a good sight line. I've got the target. Target lost. I got another. That's 5. Target marked. Just spotted one with submachine guns. Enemy spotted. I got a target carrying submachine guns. Marking a captain. No target. Repeat, no target. Marking an enemy. Moving to position. Got the target. Heads up, we got a turret. He's gone. Hey, we got a narco in the firing post. I asked the rebels to do a recon of the area. Roger, let me get in position. Moving to a good sight line. Get a load of this. It has to be the cartel's operations center for Villa Verde. The local Buchon should have quarters there. Let's take a gander. Tango is fucking down.
Tango knows somebody's got a beat on him. I called the rebels for some indirect fire. I called Pakatari for some reinforcements. I called for rebels to draw their attention. They're on to us. Step away. Shit, take it. I'm opening fire. Unidad sent some fucking reinforcements. मेरे को तो वो मिल जाना ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Got eyes on the cartel HQ building. Let's get a closer look. Look at this little arsenal. These are homemade shotgun shells. Mexican pesos and birdshot inside. That's a signature. When Elway shoots somebody, he wants everyone to know it was him. Let's grab these and give Bowman a call. Hey Bowman, I've got a plan to trap Elway. How about we kill the Unidad captain and leave Elway's signature shells at the scene to pin it on him? Sound good? Devious. Make it happen. Hold up. There's a weapons case here. Nice. I got a sniper rifle over here. बढ़िया है लाइट इसमें अरे काम रही है हाँ सबसे तकलीफ यही है डैमेज मिल गया ये दिया बट ये बात ना अच्छी है मतलब बढ़िया है मेरा तुम तो जाना था दूसरा ना हेलीकॉप्टर कहाँ है अपना यहाँ पर साले के हाथ में I asked the rebels to send over a vehicle for us. कहाँ है रोड दिल्ली का बोर्डिंग में इनके पास तो ऐसा थोड़ी है क्या दिल्ली का बॉडी ना हो अब ऐसे
I like the idea of this load of pesos and birdshot. When I was a kid, a neighbor used to fill his shotgun with rock salt instead. That's some hardcore shit. Blasting salt into the wound. I'll drive. Go on, I'll be right with you. Okay, अपने वेपन में रख सकते हैं एक बार। ठीक है, रोगे ठीक है। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर। तो बात है इसलिए करते हैं मेरा यार। हाँ तो ये ना एक जगह रुकेगा नहीं है ना। मैं रुक जाता ना तो मैं इसे लगा था पीछे से जो मतलब एक ऊपर से यार काफी सारी जगह स्कैन हो सकती है, करना तो पड़ेगा। इस जगह से बहुत सी जगह स्कैन है। I asked the rebels to recon the area for us. Here's Captain Bento. Let's take him out. Watch out, place is rigged with an alarm. We got light panels Reinforcements here. won't be flying in anytime soon. We got the alarms. Unidad captain is down. Let's plant those shotgun shells and get going. Tenemos fuerzas hostiles en el área. Preparen el ataque. Put a call to the rebels for some reinforcements. I called the rebels for a diversion. Oh hell, that was a rebel. फिर नीचे से आ गया वो। फिर कोई नहीं संभाल लेगा वो लड़की। With me, man, I'll be right there. ये कौन से इंटेंट तक देख रहा है? Fucking hell. भाई आर पाए दिन। I asked the rebels to do a recon of the area.
estado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza. I'm calling for indirect fire. I call up for rebels to draw their... With the shotgun shells there, Unidad will accuse El Way of the killing. Nobody's friends anymore. Come on, let's go see what other trouble we can stir up. Unidad bird on patrol. Watch out. No pierdan de vista al enemigo. Los refuerzos ya van en su ayuda. No hay señales de enemigos por aquí. Continúen la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Clear on this side. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. चल बस गया कोई फट गया कोई Deploying drone. ओके ठीक है यहाँ पर ये है ठीक है Is that pyrolusite mine? It's honestly more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Probably safer than the other mines around here, too. ना रन के जाएगा तब वो होगा ठीक है अब वो स्कैनिंग चल रहा है भाई लोग स्कैनिंग हो रही है देखते हैं पर इसे लेकिन हम लोग लोकेशन स्कैन नहीं कर पा रहा बहुत मीटर से दूर है इतना तो पक्का है अपने आगे से अपन लोकेशंस कवर कर लिया देखो जैसे कि अपन यहाँ है तो ये सारी अपन को पता नहीं थी दिख रही है वहाँ पर ठीक है और ये और ठीक है क्यों उन्होंने पहले इन तीनों को खींच दी बाद में उसे भी खींच दूंगा यहाँ से जंप मार के मैं वहाँ गया था मर गया कुत्ते की मौत ला ला अरे भाई
हम कहाँ हैं? अपन यहाँ हैं। इसे इन दोनों को छोड़ के सीधा अपन आए। Talk to the local union leader in Villa Verde and see if you can get him to convince the miners to stop digging I asked pyrolusite for Pacatari the to send us a cartel. vehicle. इनसे बात करनी है जाके बुलाए लीजिए कल पट्टी पे गंगा के पूछूंगा हाँ कोई दोपहर That's the union leader. Let's go talk to him. We hear you'd like to get those SB soldiers off your back. Por supuesto. Who wants to work like a slave for those narcos? If we could make that happen, would you be willing to abandon the mines for good? Pero no pueden. You can just kill off every Santa Blanca soldier in the country. If we could manage it, we would. But we can take out enough of them for you to have the time to gather your families and flee. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca has taken over our place in San Marquesa. Clear out that mine, and we should be able to get free. That we can make happen. Hang on, I'll drive. Look alive. This is the miners' district and it's crawling with Santa Blanca. Hold on. Copy. You should see our main soon. छोटी सी बात मैं चलता रहूँ मार करेंगे उनको ज़्यादा ये स्नाइपर चला रहा है इसको पता नहीं चलता देना Renee, watch out! Look alive. Wait. That truck's hightailing it out of here. You're in trouble. Get down. अरे भाग कहाँ गया 1 किलोमीटर भाग जाएगा इन्होंने मार दिया बे How are we looking? We're clear over here. Clear. Use some rounds. Clear here. That got kind of stressful, huh? Well, if you didn't want to be a gunfighter, you should have joined the Peace Corps. We shooting rebels now? नहीं rebels try to beat मार देते बार बताओ मुझे बताओ कि मार रहे Get to cover. अब ऐसा नहीं हुआ भाई I'll pilot. अब चलो दूसरे वाले को मार दिया I'm good. Crank it. Put a call to the rep target spotted. Engaging. Copy that. We rattled somebody's cage.
Ah, shit, we've been spotted. Unidad wants Elway dead for killing that officer. Sueño wants him dead to make peace with Unidad. And you destroyed the guy's pyrolusite operation. You gunslingers have fucked up Elway's world for good. I hope he isn't taking it personally. You can ask him in person. If he wants to stay breathing, Elway's got nowhere else to turn but us. And I want to know what he knows. Got a lead on his 20. Unidad is hunting him down. Head to their base, see if you can find intel on his location there. Jesus, you like giving us the impossible missions. Just give us a call if you find something out before we have to sneak into the devil's asshole, okay? I thought you liked poking around the devil's asshole. Bowman out. That ought to keep their polvo from turning nice and white. You know, pyrolusite is used to filter water, too. There are other ways to manage that, though, right? The frame-up worked. Fuck it. I was drinking bottled water anyway. The frame-up... The frame-up worked. Unidad's after Elway's head. I need you to get to him first and extract him. We'll find him a place to lay low as long as he gives us everything he knows about the cartel. बैकग्राउंड को पूरी सारी चीजें रह जाएगी सारी जितने भी जाओगे ना ना वहाँ अगर मैं नहीं जा अरे ना बंदे आटा पहले इसलिए लेते हैं फिर इसे पकड़ेंगे वापस आने के बाद करेंगे जब ये Fire. I have a shot. Engage. Looks like they're feeling foggy. That's one less bad guy. You guys all good? Damn, I love this job. ¿Qué tal? हाँ ये इधर आसपास अपना कम घर ही है क्या मेरा है बट फिर भी दूर तो पड़ेगा ही और अगर इससे रास्ते में अपने कुछ है क्या नहीं कुछ नहीं है इसलिए अपना उठा के ले जा सके एक काम आए यस हाँ ऐसा हो सकता है Call Pacatari for some reinforcements. GTA चलती है लेकिन There's the Unidad base. We're crazy sneaking into there. We don't get paid enough. You don't get crazy pay? I hear it's like 3 times combat pay, but they charge you extra for the therapy. I'm Ask looking the at rebels 2 to recon Unidad the area riflemen. for us. Over there, in the bunker. ये बंकर में घूम रहे हैं आजकल लोग तो इनके सब है
I called the rebels for a diversion. I put a call to the rebels for some reinforcements. I called the rebels for some indirect fire. That woke him up. The captain's making a run for it. Fuerzas enemigas detectadas. Todas las unidades, manténganse en alerta máxima. Unidad bird on patrol. Watch out. पहले एक बार वो कर लेना चाहिए। Thanks. जाओगे तो जाओगे, पिटोगे भी खासकर। I'm opening fire. चल अरे चलना भाई। According to this, Unidad has a tracker on Elway's car. We better hurry then before they find him. Shitballs. I put a call to the rebels for a diversion. I asked the rebels to recon this area. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. I called Pakatari for some mortar fire. सिविलियंस मरेंगे। I asked the rebels to drop off a ride. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Comiencen el ataque. Buckle up, people. हेलीकॉप्टर नहीं मिला तब तक मैं सीधा पहुंच नहीं पाऊंगा। ओके, इसे पकड़ना। ये क्या को हमारी गाड़ी ये भाई चलाई गाड़ी लगातार एक गेम में तुम छोटे चलते लेकिन तुम्हारा हाथ कैसे नहीं बैठेगा। अरे सिल्ला कैसे नहीं बैठेगा।
पे कहीं हिल नहीं रहा है, ये बस खड़ा बैठा हुआ है ज्यादा ही। पीछे वो है। भाई मैंने को बोला बैठा हुआ तो भाग रहा। Ready? I got eyes on Elway. Opening fire. Camine. At least they had descendants and professionals to snag me. Respect, gringos. पकड़ा भी कहाँ गया भाई। और अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे। Mr. Elway, you are one ugly motherfucker. Chingado. I get it now. She like a spook, huh? Have a seat. Aguanta. Respect, fool. But lady, I'm not a snitch, right? I know you have to be macho and mouth off, but I'm gonna make you talk. Even if I have to burn off what's left of your face. We don't need to get rid of your body if we just cremate you. Hey, chill, okay? I'm sure I can spare a few tidbits. Everybody just relax. ओए बड़ी चीज भी बता दिया उसने। एक और स्टोरी आ गई। मैं सोचा कि मार रहा हूँ। Desperate people make desperate mistakes, and I had made El Yayo and La Gringa desperate. I pressured them too much. But I had no choice. The attacks on our production were increasing. It was hurting our supply chain. If something was not done, we would lose our market share. So I pushed them to produce more coke. They couldn't do it. So they started to cut it, dilute it, lower the quality to increase the quantity. An understandable mistake, but a mistake nevertheless. I had spent years branding Santa Blanca, a quality product, the best in the world. A primo price for a primo product. Problem was, the product wasn't primo anymore. And someone had to pay for that. अपन कहाँ पर ये रहे। अपन ने आपका पार यूजर का वो करा देनी है इंडिया में तो यूज होगा। चलो गाइस आज की स्ट्रीम अभी यहीं तक ठीक है। बाकी करेंगे अपन कल दिन को करेंगे Heads ठीक up, है ना। Nomad. Looks like La Gringa just हॉरिजॉन्टल hit में her अभी तो वर्टिकल और inspiration हॉरिजॉन्टल cartel. और इस बार ये स्ट्रीम करेंगे वर्टिकल में सिर्फ मतलब हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव स्ट्रीम करेंगे ठीक है ना। तो आज की स्ट्रीम रख देते हैं। चलो भाई लोग बाय बाय। मैंने चल दिया। Get things back under control before Sueño noticed. If so, you got wrong.